Okay, student. We are going to discuss today about image formation. Image formation by a concave mirror. Concave mirror. ध्यान से देखना, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय ए concave mirror. सबसे पहले हम लोग मिरर बनाएंगे। नंबर 1 पे रूल मालूम है हम लोग को। पहला कंडीशन होगा when object is placed at infinity. Number 1, this is the first situation. Good afternoon. Good afternoon. When object is placed at infinity, careful रहो। यहाँ देखो, कनकेव मिरर पहले ड्रॉ कर लो और उसका वन साइड पेंटेड एंड कोटेड सरफेस शो करो, ठीक है। और आप यहाँ का मिडिल पॉइंट में प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करो पोल से। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना है गुड। प्रिंसिपल एक्सिस बन गया पी और एक्स प्रिंसिपल एक्सिस। अब तुम क्या करो, डिसाइड करो रे ऑफ लाइट को। ray of light is coming from the infinity according to question. Dotted lines रखो, फिर रे ऑफ लाइट को सीधा इंसिडेंट कराओ। वेरी गुड। ये एनी वन पॉइंट डी पर आ गया। यहाँ इंफिनिटी लिखो। ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पर है, हाँ, तो रे ऑफ लाइट इंफिनिटी से आ रहा, वो बाउंस बैक करेगा। यस, बाउंस बैक कर गया। अगर लाइट नीचे से भी आएगा किसी न्यू पॉइंट डी डैश से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द सेम पॉइंट। ये ध्यान में रखना। यस, you have got one common point F. Give the arrow. So when object is at infinity, AB is the object, AB is the object, and your principal axis is just parallel to the incident line. थोड़ा बड़ा बना सकते हो, यहाँ से बना सकते हो, है ना। और देखो, इसको हम यहाँ मिटा देते हैं और write the principal axis clearly. Yes. Where is the light after reflection passing? It is passing through the one common point, which is called focus of the concave mirror.
You can say anywhere the point C as center of curvature. What you have to write in this point? Number one, position of image you have to state. Position of image. Position of image is at focus. Second point, nature of the image. Nature of the image. Real and inverted. Real and inverted. Third point is size. Size of image. It is very small. Point size. Point size. This is your point to write. 1, 2, and 3. So all these 3 points are from the student side. And diagram must be revised and practice is required for formation of image. Image is at focus. Image is at focus. The ray of light after bouncing back coming to the principal axis in front of the mirror. That is why it is real and inverted. So this is the one point of ray diagram. Now come to the next page. Come to the next page. Case number 2 you decide. Case number 2 you decide. Suppose that we are putting the object in front of the concave mirror, but in the second case, we will write when object is placed beyond C of the concave mirror. Of the concave mirror. This is your question part. And you have to draw the ray diagram and show that how images form. To draw the image, you just once again decide the concave mirror. Yes, clearly you have to draw. And painted surface is shown to the bulging side outside. And shining surface is made free to the inside. This is the part of spherical mirror. You decide the pole, and you draw the principal axis. You draw the principal axis. With the help of scale, you have to draw and write X as a principal axis. You can write here principal axis and P for pole. According to the spherical nature, you know the point of the C, center of curvature. You just think of that. Your center of curvature is here. And beyond C, you put the object here. You put the object here. Yes, this is the object position. And no need of drawing longer object in front of the concave mirror. Draw the ray, incident ray starting from tips of the A. You just show the ray traveling and incident on
concave mirror at any one point D, from where the ray of light will pass through the lens axis, but through the one common point, which is called focus. You don't know the point, you just measure P and C, decide the middle point of the C and P, put the scale, and draw the reflected light. Yes, give the arrow, one at the point D from where it is getting reflected back and going streetwise. Other ray from the same tips will pass from the center of curvature. Yes, you give the arrow through which the light is passing, going toward the same mirror at any new point. And the light retraces its paths, going toward the C point, returning back and forming a real image. Forming a real image. The point through which the ray of light after reflection from the passes is the focus. We get the new name of the image as it as V dash. So how to draw the diagram? You must take care of how you are putting the object. You must write about what is your AB. AB is the object. What is your A dash B dash? A dash B dash is your image. Give only the outline. Don't write more. F is the focus. F is the focus. C is the center of curvature. Center of curvature. Yes. P is your pole. Pole of the mirror. Now, what is the 3 points, remarkable points about this diagram? Number one, where is the position of image? Write down the position of image. The position of image is between focus and center of curvature. Second point, nature. What is the nature of image? What is the nature of image? Nature is always the ray of light going down after reflection and retracing through the scene, forming image in front of the mirror. So real and inverted image is formed. Inverted image is formed. Now third point is the size. What is the size of image form? The size is smaller. The size is smaller. Demonize. You may write demonize. Demonized image is formed. Smaller than the object. So this is your purpose to write by drawing the clear diagram of the image formation when the object is placed beyond the sea. Okay? Similarly, you can also take another example of the situation where when object is gradually placed at any new point, how image is formed. We will once again see how image is formed. Third case, when the object is
when the object is placed at the center of curvature. When object is placed at center of curvature, how to draw the ray diagram? In every case, you have to draw the ray diagram. You just draw once again the concave mirror. You take a big size of paper and draw clearly by free hands. Make the saddle lines. Make the saddle lines. Locate the point pole. Locate the point pole. Draw the principal axis. You draw the principal axis. Put the object at C. Put the object at C. If AB is the object which is placed at C, the ray of light will pass parallel to the principal axis at point D. An image will also form at C. Image will also form at C. So just decide here the point and draw the line when it passing through the it returns back to and another line which was incident at D. This is taken as D dash point. You draw the reflected rays from this very point. So ठीक से this is your F and you show the image. Call the name A dash B dash. Call the name A dash B dash. Yes, this is the way to draw the diagram. How image is coming parallel to the concave mirror, returning back to the focus, going toward the A dash point. ये ध्यान में रखना केयरफुली. थोड़ा यहाँ पर लिखो क्या है तुम्हारा ए बी. ए बी एक ऑब्जेक्ट. ए बी इज द ऑब्जेक्ट. सेकेंड पॉइंट लिखो ए डैश बी डैश. ए डैश बी डैश. दिस इज योर इमेज. यस, इमेज आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, इमेज आ गया. पॉइंट आ जाओ यहाँ पर. वेयर इज द पोजिशन ऑफ इमेज. वेयर इज द पोजिशन ऑफ इमेज. क्या लिखोगे? एट सी. एट द सेम पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस. दूसरा बात, व्हाट इज द नेचर. व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज. व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज. क्या लिखोगे? रियल, अनइन्वर्टेड. ये बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा 10 क्लास के बच्चों को. 10 में कितना बच्चा है? 10 में कितना बच्चा है? साइज ऑफ इमेज. Same size as the object. Same size as the object. Same size as the size of the object. This is the point of answering.
how to write the 3 points after drawing the diagram. This is the way to draw the diagram. You have to do practice. You have to draw the diagram on your notebook also. Similarly, you can come to the next point. You come to the next point. Case number 4. Case number 4. Case number 4 is when the object is placed, when the object is placed, object is placed where? Between C and F. Between C and F. Between C and F of the concave mirror. You draw once again. This is the method to do practice. How to draw? You just see, you decide the concave mirror first. You decide the concave mirror first. Yes. Show the saddle lines or coated surface to the bulging side. Yes. We have prepared one mirror. M and M dash is the name of the mirror. Decide the pole. Decide the pole. P is the pole. Very good. Draw the principal axis. You draw the principal axis. Yes, you have drawn the principal axis. This is the principal axis. Now what you have to do? Place the object between C and F. You decide the point C first, and in middle between the C and P, you decide F. You choose the object. You choose the object between C and F. You write the name of the object A and B. This is your object. You try to draw the diagram, keeping the scale at the A point. Draw it parallel to the principal axis. Give the name D point and take the point F just through which the ray of light will pass. Through which the ray of light will pass. Put the scale at F and D. Draw the diagram. Yes, you try to draw. Give the arrow sign. Give the arrow sign. And one ray which is passing through the focus will comes out to be incident on mirror from this point, when another ray with the double arrow, yes, coming to concave mirror at new point D, then it gets reflected back in front of the mirror and it will cut the line. Yes, this is the double arrow. So the second ray of light, after passing through the focus, returning back, going to infinity, but cutting the ray which are coming from the D point. And we get the image beyond the C. A dash, D dash is the image. So how to draw the ray diagram needs more practice. Now you write here, where is your object? Yes, AB is our object. Very good. You write A dash, B dash, your image.
This is the image of the object. Now mention the position of the image. Mention the position of image. In every case, you decide the three important points. Where is the position of the image? The image is formed just beyond C. Beyond C is the position of the image. You have to write beyond C. This is the answer from your side. What is the nature of the image? What is the nature of the image? The nature of the image is real, no doubt, uninverted, uninverted. Good. तीसरा, size. Size of image क्या होगा? Size of image क्या होगा? क्या साइज बड़ा होगा? थोड़ा बड़ा होगा, लार्जर, बिगर, है ना? लार्जर देन ऑब्जेक्ट, बिगर देन ऑब्जेक्ट. बिगर बोलो चाहे लार्जर बोलो, देन ऑब्जेक्ट. यही जवाब है तुम्हें. तो इस तरह से देखा जा रहा है कि कैसे डायग्राम प्रैक्टिस की जाती है. ये सारे डायग्राम अब दोबारा नहीं बताए जाएंगे. आप जो सीख लिए आप उसको फिर प्रैक्टिस करेंगे. एक पॉइंट और है, ध्यान देना. पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5. Under fifth conditions, where is the position of the object? The position is of the object when, take care of, when object is placed at the focus of the concave mirror. Good. बहुत अच्छा. ये देखिए, अगर यहाँ पर फोकस पर रखता है तो आपको ध्यान रखना होगा, कनकेव मिरर पहले बना लो, उसको पहले कोटेट करो, शेडिंग लाइन दो. इन एवरी केस ये थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, एम और एम डैश करना पड़ता है, पोल डिसाइड करना पड़ता है, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना पड़ता है. प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना पड़ता है. आप प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लो. वेरी गुड. एक्स इज द प्रिंसिपल एक्सिस. अब आपको जो करना है, यू डिसाइड द फोकस. यू डिसाइड द फोकस. यहाँ पर आप फोकस डिसाइड कर लो. एफ. ठीक है, फोकस डिसाइड कर लो. यहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करो. वेरी गुड. आपने ए बी इज द ऑब्जेक्ट बोल दिया. आप इसको क्या करोगे? इंसिडेंट कराओ डी पॉइंट. तो थोड़ा सा पेशेंस रखो. डी पॉइंट पर आपने लाइट को लाया. जैसे ही डी पॉइंट पे लाइट को लाया, वो रे ऑफ लाइट एफ से ही भागेगा. ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट एफ पर आ गया तो एफ से नहीं जाएगा लाइट. द रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द concave mirror विल पास थ्रू द फोकस. और ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, एकदम सीधे चला गया. यहाँ एरो दे दो. ऑब्जेक्ट फोकस पर है और रे ऑफ लाइट भी फोकस से जा रहा है. दूसरा बात, another ray which is also passing through the tip से. तो another ray को मैं अलग कलर से दिखाऊंगा ताकि आपको ध्यान रहे. यहां से मैं ले जा रहा हूं लाइट को.
पर नए ढंग से ले जाऊंगा। गौर करना, यहाँ पर मैं सोचाऊंगा, हाँ, यहाँ से लाइट जो है मिरर के किसी नए पॉइंट पे गया, फिर वहां से लौटा। ये डी डैश पॉइंट हमारा अपर साइड में। अभी जो रे ऑफ लाइट लौट रहा है सेकेंड एरो से, वो जाएगा सीधे, वो कहीं मिलेगा नहीं, एकदम सीधा, कटना नहीं चाहिए। रुक जाओ, इसको पहले हमको इरेज करने दो, ये साफ नहीं हुआ। हाँ, देखो, ये लाइट को एकदम सीधा ले जाओ, जहां भी पॉइंट डिसाइड करते हो, हिलना नहीं चाहिए, डबल लाइन नहीं जाना चाहिए, और स्केल से इसको सीधा ले जाओ। ठीक है, और ऐसे एरो दे दो। जो डबल लाइन दिखा रहे हो रिफ्लेक्टेड रेज, वो ऐसे जा रहा है, ये जिस पॉइंट से जा रहा है उसको सी बताओ, उसको सी बताओ। वेरी गुड। अब यहाँ पर जो लाइट गया है, इसका जो ट्रैवलिंग दिखाया जा रहा है, वो कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी को जाएगा। इमेज कहाँ बनेगा? इमेज एट इन्फिनिटी को जाएगा। तो मेन प्रैक्टिस करने पर है कि बच्चा कैसे प्रैक्टिस कर रहा है। हम्म यहाँ पर पोजीशन ऑफ इमेज जल्दी से लिख लो। क्या है? एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, वेयर इज द नेचर? व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? नेचर ऑफ इमेज क्या है? नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर ऑफ द इमेज क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। ये भी ध्यान देना है। लास्ट पॉइंट, सी पॉइंट, साइज। व्हाट अबाउट द साइज ऑफ द इमेज? तो साइज के बारे में आप क्या बोलोगे? साइज क्या होगा? एक्सट्रीमली मैग्निफाइड। एक्सट्रीमली मैग्निफाइड। यस, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपको, कि व्हेन यू आर कीपिंग द objects at focus, how to draw the ray diagram, and how to decide the position of image, how to decide the nature of the image, and what is the size of the image। ये सारा तीनों पॉइंट को आपको चर्चा में लाना। ठीक है। ओके, नेक्स्ट टाइम यू विल डू प्रैक्टिस।